So basically, the core crux of the session today is to understand कि जो model होता है, a model is a tool to analyze, to conclude, and to communicate, right? To analyze, conclude, communicate. The moment we say the word communicate, अपने एक तरह से diverge कर जा रहे हैं into whether we are making a buy side model or whether we are making a sell side model, right? So when we talk about a buy side model, the user is a portfolio manager. पोर्टफोलियो मैनेजर उसको तो यार बेसिकली अपना सौदा मारना है, उसको अपना ट्रेड लेना है, उसको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, एंड एट द सेम टाइम ही डज नॉट केयर तुमने यार कितना बढ़िया से मॉडल बनाया है एंड ऑल, राइट? He doesn't care whether you are able to link all the three statements per se. He just cares whether how big is the opportunity, what is the IRR potential, what is the risk reward, what if things go south, how liquid is the opportunity. Because समझ के देखो, सिंपल बात है, अगर बेसिकली मैंने अगर मैं कोई स्टॉक पे बड़ा पोजीशन लेने गया एंड स्टॉक में लिक्विडिटी ही नहीं है, तो एक तरह से तो मेरा इम्पैक्ट कॉस्ट बिकम्स हायर, राइट? इफ दैट हैपेंस, इम्पैक्ट कॉस्ट अगर मेरा हाई हो जाता है, तो मेरा तो बेसिकली रिटर्न जो है वो गड़बड़ा जाएगा. सेल साइड में क्या होता है, इन टिपिकल जीपीएम एंड ऑल, देयर रिपोर्ट्स आर सर्क्यूलेटेड वेयर देयर रिपोर्ट्स आर सर्क्यूलेटेड, नंबर वन टू द पब्लिक, number two to the buy side firms, right? If you go to any capital IQ or such big data providers ka website, the way we use sell side reports in the buy side is that we generally take Jefferies का, JPM का, ये सारा reports ले करके ही हम लोग काम करते हैं. Over there the presentation has to be very good, and three statements are a quintessential and base building thing. So again, you guys have mentioned that given a choice, you would definitely want to make a model on the on using the right financial statements, right? We would want to use this one to make a financial statement. The reason being that it is neat, clean, and एक तरह से सब कुछ मेरे को फिगर्स अच्छे से दिया हुआ है, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस मार्जिन एक्सेट्रा. बट यहाँ पर द थिंग इज सो मिस्ड अप, ठीक है? बिकॉज एक एक आइटम को ये लोग इस तरह से दिखाता है, दिखा क्या रहा है, इनकम दिखा रहा है, एक्सपेंस दिखा रहा है, सीधा पीबीटी दिखा रहा है, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड और हैव अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कि करे क्या अपने यहाँ पर. So, exactly this is what they are testing you on in a typical JPM, and JPM is definitely a dream. I shared about Ayush. तो 2 दिन में उसको मॉडल भी बनाना था, एट द सेम टाइम उसको एक तरह से रीड भी करना था कंपनी के बारे में, अजम्पशंस को भी डिफेंड करना था. सीम्स लाइक अ कंप्लीटली इम्पॉसिबल टास्क, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर टेस्टिंग यू ऑन. क्या आप टाइम को ऑर्गेनाइज कर सकते हो? क्या आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, राइट? सब कुछ डेटा को क्लब करके ऑर्गेनाइज करके टाइम मैनेज कर सकते हो? If yes, then model building should not take you more than half an hour, max 1 hour, ठीक है? या फिर चलो आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, इफ यू आर मेकिंग अ मॉडल, सो इट शुड टेक यू हाफ अ डे. उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए गाइस, ठीक है? जो अजम्पशंस है, आपका पूरा गेम वहां पर होना चाहिए. इमेजिन सिटिंग एट अ जेपीएम इंटरव्यू, and when asked about your assumptions, you are speaking from the point of view of the buy side. आपने मॉडल बना लिया है, बट बाई साइड जैसा इंसाइट अगर आप दे पाते हो ना, कि एक तरह से दिस इज व्हाट माय थीसिस इज अबाउट दिस वन पर्टिकुलर कंपनी, you are selected spot on. Understanding? So this is pretty much what the requirement of a typical sell side is. एक तरह से this is a hack, you can say. Buy side में opportunities are very very lucrative. इफ यू ट्रेन फॉर द बाई साइड एंड देन आप जेपीएम जैसे के इंटरव्यू में बाई साइड जैसा अपना कोई इंसाइट, डिफरेंशिएटेड इंसाइट शेयर कर पाते हो, एंड इट हैपेंस वाया मल्टीपल प्रोसेसेस, right? It happens. You keep reading about the company, you keep connecting dots. If you are able to do that automatically, right, you are seen in a very good spotlight and straight away ले लेगा आपको. बिकॉज होता क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेसिकली दे दीज पीपल, मैंने दे जस्ट नो हाउ टू डिजाइन कॉस्मेटिकली, एक बहुत बढ़िया मॉडल डिजाइन करना जानते हैं. इनसाइट इज जीरो, राइट? सो वर्ड ऑफ द डे इज फोकस. बेसिकली आई बिलीव दीज टू पीपल नीड नो इंट्रोडक्शन, राइट? सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड, जहां पर गेट्स के मदर दोनों को पूछे थे, गेट्स एंड बफेट को, that what is the single most important factor in their success through life, and both of them unanimously answered this one word: focus. Problem is, who struggles with focus over here? Go ahead. Who struggles with focus?
Who struggles with focus over here? Type in the chat box. Right. A lot. So this is the issue. N number of times अपना क्या होता है, फोकस इन द सेंस सपोज अपने कुछ काम करने बैठे हैं, बट इंस्टेंटली अपने को दिख रहा है देयर इज अनदर नोटिफिकेशन ऑन द फोन दैट आई नीड टू चेक। मैं पढ़ने बैठे हैं, इंस्टेंटली मैंने वो आ ही नहीं पाता, यू जस्ट नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट। But without this one aspect, ठीक है, focus, without this one thing, believe me, nothing you can achieve. Andrew Carnegie, right? Andrew Carnegie, he was the, I think, chairman of US Steel, ठीक है? So this person was superbly successful, इतना successful हो गया कि IRS एक तरह से उसके घर पे आकर के उसको पूछ लिया, मैंने मैंने दे डिड एन एंटायर रेड, यार तुम तो कुछ दो नंबर का काम कर ही रहे हो, राइट? सो मैंने the IRS searched his entire business and they could not find a single nickel of दो नंबरी, right? Believe me, फिर वो जब उसको पूछा कि how is it that you are able to achieve this massive amount of success, his one answer was, I can keep my focus on a particular subject straight for 5 minutes without thinking about other things. Imagine, 5 मिनट अगर रेगुलरली आप कोई चीज पे फोकस कर पाते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, द अमाउंट ऑफ आउटपुट यू कैन डिराइव इज enormous. That's what we are talking about. So how do you increase focus? Focus increase करने का a very good basically you search on YouTube, you will get all types of videos on how to increase focus, meditate, breathe, etc etc, ठीक है? But there is a very effective and proven method for you to do that, and that is this: subtract. Keep subtracting unnecessary things, keep decluttering unnecessary things. So, modeling के context में we have a concept called chunking. Chunking up, clubbing items. That's exactly what we are talking about. See, basically, अगर आप एक्सपेंस वाले आई लाइन में जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में यू सी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंज्यूम, परचेज, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर पार्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, चेंज इन इन्वेंट्री, राइट? अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एंड ऑल, ये सारे को क्या मैं बोल सकता हूं, दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस. सो दीज इफेक्टिवली आर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, राइट? यहां पर जो दिया हुआ है, दैट इज प्रीटी मच व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, कि किस तरह से अपने चंक करके मॉडल को क्लीन रख सकते हैं सो दैट द मॉडल इज नॉट कंट्रोलिंग मी. माई मॉडल इज प्रीटी parsimonious, I have a control over the model, and we will use screener.in mostly to automate this entire process. कुछ कन्वेंशंस है, आई एम नॉट टेकिंग यू थ्रू द एंटायर स्लाइड डेक एंड वी आर स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, राइट? सो बताओ, क्लियर अभी तक एवरीबॉडी? परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. सो वी गेट गो. सो सो एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो मैंने इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया, दिस, एंड आई एम ओपनिंग अ न्यू शीट. एंड मैंने यहाँ पर क्या किया, बस दोनों को मिनिमाइज कर लिया इस तरह से. एंड जो डेटा शीट है, ये डेटा शीट को मैं बस ये ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट, ठीक है? एंड जो मेरा प्रीवियस स्क्रीनर का वो जो शीट खुला हुआ था, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट, या, एंड विल बी मेकिंग द मॉडल. I'll remove the grid lines. Yes. Company name. हर चीज जो अपने करेंगे वो सीधा डेटा शीट से अपने लिंक करेंगे, सो दैट द मोमेंट वी स्टार्ट विथ द मॉडल. ओके, सो द स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्या? इज द स्क्रीन नॉट विजिबल? विजिबल, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है, थैंक यू. कंपनी नेम, टिकर, एंड वील स्टार्ट विथ द मॉडल, ठीक है? जस्ट टाइप इन इनकम स्टेटमेंट, एंड मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एंड आई टेक डेटा,
फ्रॉम मार्च 21। ठीक है, इज अ प्रॉब्लम कंटेंट वर्सेस डिस्प्ले आई जस्ट मेंशन्ड। अपने क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले को बदल देंगे। दिस इज डेट, अपने इसका डिस्प्ले बदलेंगे। कस्टम, कस्टम में जा करके या डेट, डेट में वी आर गोइंग टू, कस्टम में ये हो जाएगा यस। सो वी वांट FY 21, या दिस वन इज गुड, 2021। यहां पर we will use the function, not able to see the Excel on my screen. You're not able to see the Excel. Okay, wait. Can you see the Excel now? Very good, very good. ठीक है, so we start. So इनकम स्टेटमेंट अपने बनाने का ट्राई कर रहे हैं, एंड फॉर द इनकम स्टेटमेंट वी विल जस्ट यूज पर्टिकुलर्स, एंड अपने यहाँ पर जाके मार्च 21 डेट को लिंक कर दिए। वियर्ड सा एक नंबर आ रहा है, कुछ नहीं, दिस इज डेट ओनली, बस इसका जो फॉर्मेट है ना, ये माने डिस्प्ले है, द डिस्प्ले हैज चेंज्ड अ लिटिल। तो अपने बस इसका डिस्प्ले को वापस से रीचेंज कर देंगे एंड वी विल बी डन विथ, राइट। सो दिस इज प्रीटी मच व्हाट वी हैव। मैं इसको FY कर दूंगा, आई डोंट नीड टू, या फिर या दिस वर्क्स प्रीटी गुड, 2021। एंड मैं इसको क्या कर दूंगा, A, एक्चुअल्स, सो दैट अपना जो एक्सपेक्टेड है वो थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, यहां से मेरे को क्या करना है, मेरे को 12 मंथ आगे मूव करना है। सो द फंक्शन इज इक्वल टू ई डेट, स्टार्ट डेट, एंड 12 महीना आगे मूव करना है। आइडियली इट शुड गिव मी दिस, एंड मैं क्या करूंगा, कॉपी करके इसका फॉर्मेट पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर 2022, राइट। एंड these things will be my projected, so over here let's make it expected। ठीक है, this is pretty much what I did, and yeah, you can just change the color। इनकम स्टेटमेंट में वी स्टार्ट विद द रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, SG&A, other operating expenses, and accordingly we reach our EBITDA। ठीक है, then EBITDA के बाद we'll have depreciation and amortization, and we reach BIT। EBIT के बाद interest expenses, other non-operating income expenses, and we reach our PBT। PBT के बाद taxes, and we reach net income। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से जो इनकम स्टेटमेंट मेरे को लगता है एकदम क्लीन होगा, मैं जिस इनकम स्टेटमेंट में कंट्रोल कर पाऊंगा, जिस इनकम स्टेटमेंट में काम कर पाऊंगा, दैट इज समथिंग दैट आई हैव पुट इन ओवर हियर। ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लिंक ऑल द डेटा। ठीक है, हैव अ लुक। सेल्स, यहां पर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडलिंग कन्वेंशन। आप कुछ भी एक्सपेंस वगैरह जो है, जो भी आप लोगे ना, उसको हमेशा नेगेटिव में दिखाना है। यू ऑलवेज हैव टू शो एवरी सिंगल एक्सपेंस नेगेटिव। व्हाट इज द रीजन, सपोज इसको मैंने पॉजिटिव 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 दिखाया, ठीक है, फिर मैं यहां पर एबिटा कैलकुलेट करने के टाइम आई डू दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, वन। सेकेंडली, सपोज मेरे को यहां पर एक इनकम आ गया, फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, जो भी ईबीआईटी मेरा आया, ईबीआईटी माइनस दिस प्लस दिस। सो ये माइनस प्लस करने के पूरा चक्कर में ना, देयर माइट बी एन इश्यू एंड माय बैलेंस शीट माइट नॉट बैलेंस। इफ दैट हैपेंस, ठीक है, देन इट इज अ बिग फ्रस्ट्रेशन, एंड
बिलीव मी इट्स ह्यूजली इरिटेटिंग टू गो अहेड एंड सी कहां पर मेरा एरर हुआ है, राइट? दैट इज प्रीटी मच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ माइनस साइन बिफोर आई डू एनीथिंग. एंड डेटा शीट में मैं जाऊंगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऐड द पावर एंड फ्यूल, add the other manufacturing expense minus the change in inventory. I hope this one is okay. Minus मैंने क्यों किया change in inventory को? Because change in inventory is closing minus opening. हमने हमेशा जिंदगी भर क्या सीखा हुआ है? Opening stock add purchase minus closing, right? Opening stock add purchase minus closing. That is what my COGS is, right? तो opening minus closing हो रहा है ना? Change in inventory तो closing minus opening दिया हुआ है, इसको मैंने सीधा माइनस में ले लिया. बताओ, क्लियर है गाइस? क्लियर है? Very good. Very good. Similarly, I'll do the same thing for SG&A. SG&A में we are having this selling general, माने selling and administrative expense plus this employee cost. तो मैंने एम्प्लॉइज का जो सैलरीज मेरे को देना था और सेलिंग जनरल एक्सपेंसेस जो है वो सारा भी मैंने यहाँ पर दे दिया. करेक्ट. एंड फॉर द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आई जस्ट पुट इन ओवर हियर. सो नाउ आई एम डूइंग अ लिटिल बिट फास्ट. ठीक है. अब देखो, द मैं कोर पॉइंट इज कि जब मैं इसको ऐड करूंगा ना, आई डोंट इवन नीड टू डू एन इक्वल टू सम, आई कैन जस्ट हिट ऑल्ट इक्वल टू. ठीक है, वेट, ऑल्ट इक्वल टू, सीधा ऑटो सम करके ये मेरे को फिगर दे देगा. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. आई जस्ट चेंज द फॉर्मेट ऑफ दिस. अगेन डिस्प्ले जो है मेरे को इसको चेंज करना है. व्हाट आई वांट इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि जो पॉजिटिव नंबर हो वो इस तरह से आए, कॉमा. ठीक है, नेगेटिव नंबर हमेशा रेड में आए, ऐसे माइनस प्रोट्यूब ना करे, इट शुड बी इन ब्रैकेट्स. एक और सेमी कोलन दूंगा तो मेरे को बोल रहा है तुमको जीरो जो है, जीरो किस तरह से दिखना चाहिए? आई वांट इट टू बी लाइक अ डैश. द मोमेंट आई डू दिस आई गेट दिस गुड थिंग. ठीक है, कॉपी कर दिया. एंड ये जो फॉर्मेट है ना, इसको मैंने पूरा सीधा कंट्रोल ऑल्ट वी करके शीट में ही पेस्ट कर दिया. Okay, so because I'm also doing this, so it won't allow. Yeah, Control Alt V कर कॉपी, या Control Alt V करके सीधा टी फॉर्मेट पेस्ट कर दिया. Okay, so it's going to affect a lot of cells, so sure, यहाँ से भी कर सकते हैं. या बोलो, क्लियर है? यहाँ पर अब क्या होगा ना, कि बेसिकली वॉट एवर ऑपरेशन आई डू, फॉर एग्जाम्पल मेरे को डेप्रिसिएशन को माइनस में लेना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा इक्वल टू डेप्रिसिएशन जो है इसको मैंने माइनस पे ले लिया. ठीक है, दिस थिंग, दिस वन. Do you see this? Automatically मेरा same format में आता है. And what I can do is I can just put in the line. EIT. Same with interest. Because it is an expense, I'm simply going to take it in this minus. And other income जो है, other income को भी अपने इसमें ले लेंगे, पॉजिटिव. थोड़ा बहुत लग सकता है कि द वर्क इज अ लिटिल स्ट्रेनस, बट बिलीव मी वंस यू आर डन विद दिस, आपको जिंदगी में एक ही बार करना है ये काम. ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड. टैक्सेस, या द टैक्स पार्ट, जस्ट डू एन एडिशन. डन. Since it is done, I can simply drag all these figures over here. Imagine the amount of time you guys are saving just by doing this, because आपको annual report से एक एक फिगर करके कॉपी करके लिखना होता, right? This. So we get to the balance sheet part, and yeah.
इसको मैं बस एक बार फ्रीज कर दूंगा सो दैट दिस जस्ट डज नॉट चेंज एंड आई कॉपी दिस paste it over here. Cash flow statement. The trick to always match a balance sheet nice is to keep it clean. I told you, ठीक है. एंड उसका एक बहुत इजी तरीका क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, दैट प्रैक्टिकली इज द प्लग. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अपने को बनाना ही नहीं है, लेट द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्ड इन इटसेल्फ. ठीक है, अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी वैसे हार्ड पंच नहीं करना है, एवरीथिंग हैज टू बी अ लिंक. अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इनकम स्टेटमेंट, यहां पर भी जो फिगर्स अपने डालेंगे ना, एवरीथिंग हैज टू बी अ लिंक. ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्केड्यूल. दैट प्रीटी मच इज द थिंग. नेट कैश, बिगिनिंग कैश, एंडिंग कैश. राइट, we don't need to do anything per se. I'll just take the balance sheet over here. Sheet. Equity share capital, retained earnings. हाँ. Now understand. Problem क्या है screener.in का major problem? See, they have done an excellent job at chunking and clubbing all the items nice. But have a look. Basically, when we are talking about forecasting, ठीक है, we are talking about forecasting the sales, COGS, पेएबल्स, रिसीवेबल्स एक्सेट्रा. तो मेरे को तो ये चाहिए होगा ना कि रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश, ये सब मेरे को ब्रेक करके दे. व्हाट दे हैव डन इज, वो लोग अदर एसेट्स में दे हैव चंक क्लब्ड इन टू मच. तो अदर एसेट्स में इस तरह से दिया हुआ है, बट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश को अलग से भी ये लोग तोड़ के दिया हुआ है, विच इज नॉट अफेक्टिंग दिस टोटल. तो ये अदर एसेट्स में से अगर मैं ये तीन को माइनस कर दूं तो मेरे पास अदर एसेट का जो अदर करंट एसेट टिपिकल रहता है वो रह जाएगा. राइट. पॉइंट इज दे हैव नॉट डन द सेम फॉर अदर लायबिलिटीज. पेएबल्स जो है उसको भी अदर लायबिलिटीज में ही दे दिया हुआ है. सो आई डोंट रिमेंबर द पर्सन हु आस्क्ड मी दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज कि अपने स्क्रीनर डॉट इन यूज करेंगे या वाइस शीट. तो वाइस शीट से अपने क्या करेंगे, पेएबल वाला जो फिगर है उसको निकाल देंगे बस. ठीक है, उसको अलग से अपने निकाल देंगे एंड अदर लायबिलिटीज को उससे माइनस कर देंगे. Right, that's pretty much what we are going to do. Remaining everything will remain the same. Borrowings and payables, other liabilities. Right, total. So yeah, and by the time I'm making this, मैं आपका वो वाला क्वेश्चन फिर से आंसर करने का ट्राई करता हूँ. जो अपना सीओजीएस है, जो अपना सीओजीएस है, ठीक है, दैट इज उसका टिपिकल फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. करेक्ट है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो ओपनिंग, और एक तरह से हो क्या रहा है अपने को, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है ना, एक बार के लिए परचेस को भूल जाओ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है. लेकिन ये जो चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है ये तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया हुआ है. अंडरस्टैंडिंग, दिस इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. तो मेरे को इसको बस माइनस में लेना है. राइट, जैसे ही मैंने उसको ले लिया तो रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों को ऐड करेंगे ऐसे, तो वी विल बी गेटिंग आवर सीओजीएस. बताओ, इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वी आर जस्ट लुकिंग एट हाउ टू मेक द मॉडल. ठीक है, assumptions and everything that we will discuss later. ठीक है, receivables, inventory, other assets, cash. And we will just use a hard check over here.
ठीक है, and I'll keep on linking all the data from the data sheet. Borrowings, payables. This is exactly where we need to do some work. ठीक है, let's see. Payables को I'm simply to count payables, and मैं यहाँ पर वाइज शीट को यूज करूंगा. फंक्शन action construction equipment, and I'll just hit for payables, count payable balance sheet for the period of 21, 22, 23, 24 and 25. पांचों का एक शॉट में आ जाएगा इस शीट से, राइट. जस्ट कॉपी दिस फंक्शन, इसको पेस्ट कर दूंगा, एंड आई विल जस्ट डिवाइड इट बाय 10 to the power 7 करोड़ में मेरे को चाहिए. अंडरस्टैंडिंग कितना ज्यादा इजी वे में मेरा पूरा काम हो गया. तो just take this one formatting सारा, I'll paste it over here. So that क्या हो ना कि मेरा जो formatting है that just remains intact, at least for the statements. And other liabilities will be nothing but this minus जो मेरा पेएबल का फिगर है, इसको अगर मैं ऐड करता हूं, I get exactly 1055.29, and I'll just drag it like this. Yeah. Similarly, for PP&E, we will do the same thing. We have something called net block. I'll just share what net block is in a moment when we make the asset schedule. So what I did was net block and capital work in progress दोनों को साथ में ले लिया. For investment as well, I'm taking this, and other assets जो है, other assets, इसमें से what I'm going to do is I'm going to simply deduct this receivable, inventory and cash. तो मेरा जो पड़ा हुआ रहेगा वो प्योर अदर एसेट्स पड़ा हुआ रहेगा. रिसीवेबल्स को आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हियर, इन्वेंट्री को आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हियर अगेन अलग से, सिंस वी हैव बीन गिवन विद द फिगर, एंड कैश जो है दैट्स समथिंग आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर. एंड हमेशा ये बैलेंस शीट का चेक करते जाना. दैट्स ऑल देयर इज अबाउट प्लॉटिंग. बताओ यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक, परफेक्ट. ठीक है, हाँ जो भी प्रॉब्लम है एक बार प्लीज आप लिख देना, ठीक है ना. हाँ, पेएबल वाले पार्ट में देयर इज अ कंफ्यूजन, तो आप एक काम करो, आप लिख दो, वी विल डेफिनेटली एड्रेस द सेम इन द एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, सो या वी हैव द बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो सारा है. नाउ वी कैन सिंपली वर्क ऑन बिल्डिंग आवर assumptions. Yeah.
ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, कि जो भी अजम्पशंस आप लोगे, जितना कमती आपको ऊपर नीचे करना पड़े फॉर द लिंकिंग एंड ऑल, उतना बेटर। रेवेन्यू ग्रोथ, लेट्स सी। ठीक है, we had projected that revenue is going to grow by 15 15 and 15, बेसिक मैनेजमेंट गाइडेंस से ये प्रोजेक्ट किया हुआ था। if anybody is having an issue or question regarding the same, ठीक है, if anybody is having an issue regarding the same, तो बेसिकली आप एक बार वो वाला क्लास देख लेना, ठीक है ना। 15% से आई एम जस्ट ग्रोइंग द रेवेन्यू। सो एक एक करके जैसे जैसे अपने अजम्पशन लेते जाएंगे, वी विल जस्ट कीप ऑन पोस्टिंग इट ओवर हियर, right? So we have the revenue, and we will keep on then just having our assumption stream flow. EBITDA, EBITDA margin, total OPEX, COGS, SG&A, other OPEX, COGS percentage, total, SG percentage total, other percentage total, okay, total. And we'll just calculate the EBITDA margin. अपने प्रोजेक्ट किए थे कि फॉर एवरी 100 basis point increase our sorry, for every 500 crore increase in revenue, operating leverage will kick in and EBITDA margin will expand by 75 basis points, right? So 15.75%, 16.5%, and यहाँ पर it was 17.5%. All these assumptions were discussed in the previous module, ठीक है ना। बाई साइड मॉडलिंग वाला जो क्लास है यूट्यूब में है, you can definitely watch the same, as in how did we arrive at these assumptions and why did we rather arrive at these assumptions. This particular module is to, rather this particular class is to just help you to see कि model exactly बनते कैसे हैं and how do we mend that key requirement of the model, ठीक है, that is matching the balance sheet, keeping the model clean, and so that you guys can work on building better assumptions, ठीक है। So I've got the revenue, I've got the EBITDA, I've got the margin, दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा, I'll get the total operating expense. I don't need to practically do all this, but since मेरे को ये वाला जो part है ना, I need to fill it up so that the model becomes functional. That is the reason मैं क्या कर रहा हूँ, total operating expense को इस तरह से ले रहा हूँ, right? Now what I'm simply going to do is I'm going to take this and मैं सबका एक percentage ले लूंगा, this divided by this. I'll freeze the row. The best part of doing a common size analysis is that आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप others में फोकस कर रहे हो ना, you are wasting a hell lot of your time. Focus on the COGS, understand something, total expenses का, ठीक है, total operating expense का 87-90% is just the COGS, ठीक है। Follow the 80-20 principle and focus on this bit only. So I'm going to assume that they remain the same, एंड अकॉर्डिंगली जो मेरा टोटल ओपेक्स था, दिस मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू सिंपली हिट अ माइनस ओवर हियर अगेन बिकॉज ऑफ आवर रूल। अपने हर चीज को यहां पर माइनस में लेंगे इनकम स्टेटमेंट में, एंड आई एम गोइंग टू फिल इट अप अगेन, वी एड एग्जैक्टली मेरा जो ईबीआईटी था, एबिटा था, that is 603, 726 and 886, we got the same,
ठीक है. Guess everybody is comfortable over here. Everybody is comfortable, no? Great. Very good. सिमिलरली मेरे को टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट निकालना अगर होगा, सो इट इज वेरी सिंपल. आप लोग निकाले हुए हो सीएफए लेवल 1 में, राइट? इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय द पीबीटी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, राइट? So you see, it is around 26 to 25%. So going forward, I'm simply going to assume 25%, 25%, and 25%. There is another modeling convention जो आप लोगों को जानना चाहिए. That is, कोई भी नंबर अगर मैंने हार्ड पंच किया हुआ है, ठीक है, हार्ड पंच, it should always be in blue. Same with this, since I have hard punched these numbers, again with these. सो दैट जो पर्सन आपका वो देख रहा है ना, उसको सीधा क्लियर कट पता चले कि हाँ ठीक है, ये जो नंबर है ये हार्ड पंच नंबर है. ठीक है. डिड द टैक्सेस, देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस. That's now this is where I'm going below the operating income line. This use other percentage revenue. सो अगेन, इफ एनीबडी सेज कि यार आपने अदर ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑल का तो ठीक से प्रोजेक्शन एंड ऑल किया नहीं है, तो यू कैन सिंपली से दिस कि माय कोर फोकस इज टू प्रोजेक्ट राइट नाउ द रेवेन्यू, सीओजीएस एंड द मार्जिन वाला पोर्शन, बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर 80% और मोर देन 80% ऑफ द सेल, राइट? यहाँ पर अदर वाला जो पार्ट है वो रेवेन्यू का बस 3-1% है, सो इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. इफ आई डू हैव द टाइम एंड इफ आई हैव द रिक्वायरमेंट, आई डेफिनेटली डू इट. ठीक है. अदर मीन्स एंड सिंस इट्स एन इनकम, मैं इसको पॉजिटिव में ही रख रहा हूँ. नाउ वी हैव डेप्रिसिएशन, वी हैव गॉट इंटरेस्ट. लेट्स चेक. डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन परसेंटेज रेवेन्यू, interest, interest percentage revenue. My depreciation is this, and my interest is this. Again, you can still सी डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपनी का तो डेट है ही नहीं, इंटरेस्ट इज जस्ट वे टू लो. आप जैसे जैसे मॉडल बनाते जाओगे ना, आपको और समझ में आते जाएगा कि यार कंपनी फंडामेंटली इट इज टू स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज कंपनी इज ग्रोइंग, इट्स रेवेन्यूज, इट्स margins are going to expand, and at the same time company without taking debt, it is growing. That is an extremely good observation you can showcase, right? Yeah. So the more insights that you can generate from your model, again, a model is a tool to analyze, to conclude, and to communicate. And here we are not doing any of it. We're just trying to build the model. But आप समझ के देखो, मॉडल बनाते बनाते the more you stay with it, you get to understand कि आपको अगर digging करना है, you want to dig deep and you want to study, तो आपको बेसिकली ये सारे चीजों पे फोकस करना है ना. You just need to focus on all these things. कंपनी के बारे में मेजर insights आप ड्रॉ कर पाओगे, right? That's pretty much the concept. And I'm going to take the depreciation. I'll take the interest.
एंड मेरा जो टैक्सेस है, तो मेरा ऑलरेडी किया हुआ था, सॉरी आई एम नॉट पुट एनीथिंग ओवर, अगेन इट्स अ मॉडलिंग डिसिप्लिन। जो टैक्सेस वाला भी पोर्शन है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकम स्टेटमेंट को मेरे को क्लीन रखना है। आई नीड टू मेक द इनकम स्टेटमेंट टोटली क्लीन, सो दैट मेरा जो इवन टैक्सेस वाला, आई कुड हैव सिंपली डन द पीबीटी ओवर हियर इनटू टैक्स रेट, बट आई विल नॉट डू दैट। एवरीथिंग हैज टू बी अ लिंक टू अ पर्टिकुलर स्केड्यूल, given that this is not a full bloom course, ठीक है, this is a mini course, you can say supporting course, so I'm just showing you based on assumption, but in a full course basically everything, be it revenue, be it margin, be it taxes, हर एक चीज का schedule बनता है, and that schedule has to be very much assumption oriented, story oriented। आपको बोलना आना चाहिए कि किस तरह से आप काम करोगे, ठीक है। so that's pretty much it। so अपना income statement तैयार हो गया। इज द ट्रिक, बेसिकली क्या होता है आपका कि कंपनी में, ठीक है, जैसे ही आपने इनकम स्टेटमेंट खत्म कर लिया, इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट फिलिंग इन की कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका आइटम्स एंड ऑल कैसे कैसे जाता रहेगा, सो दैट क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मोर लाइक जस्ट द कैश अकाउंट, ठीक है। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस दैट इज गोइंग टू बी द प्लग इन दिस कैश वाला पोर्शन। जैसे ही आप इस कैश को एकदम प्लग इन कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। दैट्स द थिंग। सो एनीवे, विल सी, विल स्टार्ट विथ ऑपरेशंस। तो यहां पर क्या हुआ देखो, सी अगेन दिस इज अ ट्रिक, कि बेसिकली मैंने सीएफओ सीएफआई सीएफएफ करके नेट कैश छोटा सा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया। मेरे को भी पता है कि दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट, आई हैव टू ऐड इन ऑल द आइटम्स, बट यहां पर आई कैन सिंपली कीप ऑन एडिंग रोज ना, मैं यहां पर रोज ऐड कर सकता हूं, जितना भी मेरे को करना है, आई कैन डू ऑल दैट। नेट प्रॉफिट, इफ आई जस्ट हिट ऑल्ट एच एंड सिक्स, थोड़ा सा साइड में हिल जाता है वो चीज, ठीक है। एंड आई डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दीज, इधर से ही सीधा जो प्रॉफिट है नेट इनकम को इधर ले लो, सो दैट नेट इनकम का स्टोरी एक शॉर्ट में खत्म हो जाए। एंड सिमिलरली अपने क्या करेंगे, लेट्स सी, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, ओपनिंग, एड नेट प्रॉफिट, लेस डिविडेंड, क्लोजिंग। तो मेरा क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, या somebody was saying that retained earnings is good, good observation। नेट प्रॉफिट थ्रू एंड थ्रू कितना आया हुआ है कंपनी का, I don't need to make the whole schedule per se, and dividend I can again source from the data sheet। Yeah, this is the dividend amount, right? If you want, you can also make the formatting similar। And next year का obviously जो मेरा, sorry, next year का जो मेरा opening होगा, that is going to be the previous year का closing, right? 2026 का। Yeah, नेट प्रॉफिट जो है उसको मैं सीधा, आई कैन ड्रैग इट लाइक दिस, राइट? तो मेरा तीनों नेट प्रॉफिट आ गया, एंड डिविडेंड। सो फॉर डिविडेंड वी आर सिंपली गोइंग टू टेक अ पे आउट रेशियो। व्हाट हैज बीन द पे आउट रेशियो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, इफ आई डू, अगेन आपको कंपनी के बारे में फिर से इंसाइट्स मिलते जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी इज हैविंग अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, राइट? स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो। If that is the case, that goes to show 93 to 94% कंपनी रिटेन कर रहा है, that goes to show कि कंपनी is actually a growth company, right? इतना रुपया रिटेन कर रहा है, इतना हाई रेट से ग्रो कर रहा है, right? That is pretty much what an insight I can currently draw। ठीक है, just do a median because anyway it is a stable company। Yes, ठीक है, बताओ क्लियर हो रहा है?
ग्रेट। सो मेरा एक तरह से रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, आई गॉट द क्लोज पार्ट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन स्टार्ट फिलिंग अप माई बैलेंस शीट एज वेल। आई एम गोइंग टू अस्यूम कि कंपनी जो है, इट इज नॉट गोइंग टू इश्यू मोर नंबर ऑफ शेयर्स, और इज इट इज नॉट गोइंग टू बाय बैक मोर नंबर ऑफ शेयर्स, सो शेयर कैपिटल विल रिमेन द सेम। जस्ट पुट एवरीथिंग इन द सेम। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स का मेरे को तो ऑलरेडी आ ही गया। रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू कैश जो मैंने प्रॉफिट जो है उसको मैंने बैलेंस शीट में ले लिया, एंड प्रॉफिट उसको मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ले लिया, राइट। अगेन, सिंस मैंने डिविडेंड को भी यहां पर टच किया था, आई एम गोइंग टू प्लेस द डिविडेंड अमाउंट ओवर हियर। सीएफओ में नेगेटिव आएगा बिकॉज कंपनी इज पेइंग इट आउट, सो इट इज एन आउटफ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। Depreciation. So before working capital, we can use adjustments like this. तो depreciation जो है, that is a non-cash expense, so it should ideally not be allowed to be deducted, right? So we are adding it back. इंटरेस्ट जो है, अगेन इट इज अ फाइनेंसिंग एक्सपेंस, तो फाइनेंसिंग में उसको डिडक्ट होना चाहिए था। व्हाट वी आर डूइंग इज अपने इसको यहां पर ऐड कर रहे हैं, एंड फाइनेंसिंग जो है, इट इज जस्ट अ रिक्लासिफिकेशन दैट वी आर डूइंग, राइट। फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट को यहां पर इस तरह से दिखा रही है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, ठीक है। नाउ वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द बैलेंस शीट का आइटम्स। तो बैलेंस शीट में वी हैव अदर लायबिलिटीज, यहाँ पर अदर लायबिलिटीज में आई एम अज्यूमिंग दीज आर गोइंग टू रिमेन द सेम। फर्स्ट, गेट एवरीथिंग जो आपको लगता है कि आपका फोरकास्ट है नहीं, या फिर इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, हैव इट आउट ऑफ साइट। सिमिलरली फॉर इन्वेस्टमेंट्स, non current investments, I'm going to assume they will remain at their current value, same for other assets. So I have to work with PP&E, I have to work with receivables, I have to work with inventory, and cash is the plug figure, right? और यहाँ पर मेरे को borrowings and accounts payable, ये दोनों चीजों के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। यहाँ पर I'll just try to give you a flavor of what a typical schedule looks like, ठीक है? Let's make our working capital schedule, ठीक है? So for a working capital schedule, I need three figures. One is receivables, second is inventory, third is payables, right? I need the revenue. Yeah, sorry. And I need COGS. What do I need to calculate? Receivable days, inventory days, payable days. This is pretty much what I need to do. And days के basis पे I'm going to be forecasting the receivable, inventory and payable. तीन balance sheet का जैसे ही item मैंने forecast कर लिया, I need to capture the same in the cash flow statement. This is the whole concept. So I start with the very basic revenue का मेरे को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, revenue and COGS जो है, ये दोनों को मैं सीधा यहां से ले लूंगा, राइट। एंड ये मेरा क्लियर कट फोरकास्टेड ही है। For receivables, I'm going to do the same thing. Inventory, payables. ठीक है ना। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डेज। तो बेसिकली डेज क्या होता है, जो अपना रिसीवेबल टर्नओवर होता है या इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, उसको बेसिकली 365 डेज में अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। सो basically what I'm going to do is I'll calculate the inventory turnover, like say receivable turnover,
रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ रिसीवेबल्स. आई होप एवरेज इज ओके विथ यू कि मैंने यहाँ पर एवरेज क्यों किया, बिकॉज बैलेंस शीट से ये आइटम आ रहा है ना, सो दिस इज फॉर अ पॉइंट इन टाइम. पीएनएल से रेवेन्यू इज कमिंग, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं एक तरह से एवरेज ले रहा हूं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पीरियड ऑफ टाइम का सूडो. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट 365 ओवर हियर. ठीक है, एंड इसका भी मैं डिस्प्ले को चेंज करके आई जस्ट मेक इट डेज, 46 डेज. ठीक है, सो आई हैव गॉट रिसीवेबल्स का डेज का प्रोजेक्शन, not the projection per se, the days. Similarly, I'm going to do the same thing. Wait, just give me a minute. Yeah, revenue receivable. For inventory as well, I'm going to do the same thing. So मेरा COGS was this, and inventory का मैं एवरेज ऑन एन एवरेज मेरा इन्वेंट्री इतना था, तो मैं इतना ही इन्वेंट्री का टर्नओवर कर पाया, इन्वेंट्री को बेच पाया. डेज के बेसिस में मेरे यहाँ पर इन्वेंट्री का जो डेज होता है इन जनरल दैट इज 87 डेज, करीब 3 महीने का मेरा इन्वेंट्री पड़ा हुआ रहता है. ठीक है, गोडाउन एंड ऑल में on an average it is 87 days, and believe, see, this is reducing as well. Similarly for receivables as well, this is reducing. You can keep on drawing your insights. Similarly for the payable wala portion, more or less it is going to be the same thing, right? So COGS divided by average payable 365. A comedian. Now this is pretty much what I'm looking out for. तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि when I'm putting receivables का figure, I'm using a story basically. What I'm trying to say is that out of 365 days, 24 days मेरा receivables में पैसा अटका हुआ रहता है. ठीक है, और मेरा रेवेन्यू इतना है. This is how I'm getting the receivables का figure. Similarly, if you are doing it with the story, so out of 365 days, 82 days में मेरा क्या होता है, जो इन्वेंट्री है उसमें गोडाउन में माल पड़ा हुआ रहता है, तो मेरा इन्वेंट्री का दिस इज द फिगर. सिमिलरली सप्लायर्स को जो मैं पे करता हूं आउट ऑफ 365 डेज, 100 दिन के अंदर अंदर मैं पेमेंट करता हूं, राइट? सो दिस इज व्हाट माय पेएबल लुक्स लाइक. सो change in receivables, change in inventory, change in payables. We can very easily see कितना हुआ, and exactly ये जो change है we are going to capture this. So a decrease in receivable is definitely an inflow of cash. An increase in inventory is an outflow of cash. That is the reason I am doing previous one minus closed one. And a decrease in payable is again an outflow of cash. बताओ क्लियर है यहां तक? क्लियर? गुड, चलो ग्रेट. तो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फिगर्स भी आ गया, एट द सेम टाइम मेरा जो बैलेंस शीट है उसका फिगर्स भी आ गया, राइट? सो आई एम सिंपली गोइंग टू लिंक दीज फिगर्स ओवर हियर. टेबल्स, receivables, inventory, almost done. And over here, change in receivables, change in inventory, change in payables. ठीक है,
change in receivables, change in inventory and change in payables. This pretty much takes care of my cash flow statement में CFO वाला जो portion है that. अब मेरे को fill in करना है this borrowing part and this PP&E part and finally this cash वाला जो part है that. तो now just make the fixed asset schedule. Fixed asset schedule में let's understand होता क्या है same for every schedule this is one rule. Opening, add capex, less depreciation, closing. ठीक है. We'll drop capex as a percentage of revenue. ठीक है. And last closing, what was it? Yeah. This is pretty much अपना जो PPNE था, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, अपना फिक्स शेड्यूल का दिस वाज द वैल्यू. बट डेटा शीट में आप जाओ, आपको एग्जैक्टली फिगर क्या दे रहा है गाइस? सी, आपको एग्जैक्टली जो फिगर दे रहा है ना, दैट इज नेट ब्लॉक. नेट ब्लॉक इज समथिंग वेरी डिफरेंट. नेट ब्लॉक इज केपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन, जो चेंज इन नेट ब्लॉक होता है. नेट ब्लॉक का मतलब है ग्रॉस ब्लॉक, टोटल आपका जो भी एसेट्स ऐड होते जा रहा है माइनस डेप्रिसिएशन. जो आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जो डेप्रिसिएशन करके आपका एसेट्स का फिगर आता है, दैट ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज योर नेट ब्लॉक. तो अगर मैं चेंज इन नेट ब्लॉक करता हूं, ठीक है, चेंज इन नेट ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड capex minus depreciation. I do have the depreciation figures over here. They are projected as well. So I can simply back out कि capex जो है वो मेरा कितना हुआ था. Right? So this capex minus depreciation plus depreciation, this was my capex. So as a percentage of revenue, what was my capex? इसको capital intensity भी बोला जाता है. How capital intensive is this particular company? Okay, just give me a minute. Yeah. And I think we made an issue over here. Yes, it is fine. ठीक है. Change in net block is capex minus depreciation. Yeah, and what I'm doing is I'm basically adding the depreciation per se. Yeah. हाँ, तो मैंने receivables को गलती से लिखा था. So it will be capex divided by the revenue. Yeah. So capex as a percentage of revenue, it is less capital intensive because capex उतना रेट में हो नहीं रहा है जितना मैंने revenue का एक significant portion लेना चाहिए. So that's a good thing because if the growth is coming into the company without capex being a very significant part of it, then depreciation more or less is managed. ठीक है, then at the same time आपका जो interest है वो भी more or less is managed. I'll just take a median again and I'll project it. Multiplied by the, yeah. So I'm getting going forward, what should ideally be my capex? Depreciation का मेरा projection किया हुआ है and I'm simply going to link it over here. This depreciation should ideally be in negative figures. I hope you are okay with this because we are simply going to add it up. Okay. And this figure is going to be the opening. And
ठीक है, बताओ, क्लियर यहाँ तक? क्लियर? गिव मी थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये जो मेरा फिगर आया, आई एम सिंपली गोइंग टू पुट इट इन माय पीपीएनई वाला पोर्शन। एंड ये जो कैश है, नॉट द कैश पोर्शन, मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ओवर हियर, आई नीड टू पुट इन द केपेक्स। कितने का केपेक्स कंपनी का होने वाला है? So almost everything is done. Now we just need to make the debt assumption. Let's, जो debt है मेरा, that is going to be the borrowing part. And we'll take the EBITDA and the debt EBITDA over here is this much. Again, company has been able to repay a lot of its debt so that अभी extremely high EBITDA generate करते जा रहा है. And this is not even interest coverage ratio. ये एक तरह से पूरा debt को ही repay कर सकता है with whatever EBITDA they are generating. So when you start doing all this now, तो you keep on generating these insights. तो मेरा जो EBITDA है उसका मेरा projection किया हुआ था. I just do a median over here because it doesn't make sense for me to capture these numbers as well because I'm not projecting कि company significant debt going forward लेने वाला है. I can very easily get my debt का figure. 4 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ करके debt company is going to take, right? So and cash flow statement में borrowings. Again, increase in debt is an inflow of funds, right? This is pretty much what we are looking over here. इनकम स्टेटमेंट में अपने मोर और लेस सारे आइटम्स को कवर कर लिया. कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वी हैव डन द सेम एंड बैलेंस शीट में भी वी हैव डन द सेम. नाउ दिस इज द थिंग, अपने ट्राई करेंगे टू सी वेदर अपना बैलेंस शीट मैच हो रहा है या नहीं. अगर हो रहा है तो दैट मीन्स वी हैव डन इट करेक्टली. अगर नहीं हो रहा है देन वी विल सी व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. Just do a sum. एंड जो एंडिंग कैश मेरे यहाँ पर पहले था 30.
That becomes my beginning cash. राइट, सीएफओ प्लस सीएफआई प्लस सीएफएफ करके मेरा नेट कैश आया। बिगिनिंग कैश को मैंने उस पर ऐड किया, करने के बाद मेरा जो एंडिंग कैश है वो आ गया। आइडियली अगर मैं इसको दे देता हूं तो मेरा होना चाहिए। राइट, सो दिस इज व्हाट द इशू इज। सॉरी, इसको मैंने फिल इन नहीं किया। दैट, बताओ, क्लियर है गाइस? सो व्हाट ऑल आई डिड ओवर हियर इज बेसिकली कि मेरा जो पूरा इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको मैंने पूरा क्लीन रखा। सी, एवरीथिंग ओवर हियर इज अ लिंक। कुछ भी कहीं से भी कोई कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। सिमिलरली फॉर माई बैलेंस शीट, सिमिलरली फॉर माई कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ दिस इज वेर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आप इसको सेव करो, ठीक है? टू सेव इट on my desktop, test model, three statements. Now, go to screener.in slash Excel. Choose the file you want. Okay. Save one another Excel file. File, save, copy. Yeah. Test model, three statements. I'll save it on my desktop only. Yes, so it is done. And cross it. Yeah. So screener.in slash Excel जो है, इसमें I'm going to select the file. Test model three statements and I'm going to upload it. तो मेरा जो डेटा शीट है that completely got uploaded. Now tell me a company, any company. Give me a company. Financial services नहीं, give me any company. JSW Infra. Is it listed? Yeah. Yes. Export. Did you just see what happened? मेरा पूरा क्लियर कट मॉडल मेरे को आ गया यहाँ पर, राइट? ऑल द बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग हैज बीन टैलीड. कुछ भी, I didn't have to do anything. All the assumptions are in place. बस remember that what wherever I have used these blue में lines, ठीक है, hard punch किया हुआ है, I just need to play around with these. Let's check the authenticity of the data. ठीक है? So I'll just close this. Let's go to screener.in, JSW Infra, March 25, 4476, 4476. बताओ, क्लियर है? सीधा 15% के ग्रोथ रेट से किया हुआ है, आपको मॉडल बनाना ही नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ऑटोमेशन इज. या वी कैन डू ट्रेंड, वी कैन डू एचसीएल, एनीथिंग वी कैन डू. सो दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन. मेरे को क्या होता है ना कि सी, इफ यू डिड नॉट मेक द मॉडल विथ मी, सो इन दैट केस इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है? बट आइडियली आपको मॉडल बनाना चाहिए, खुद से बनाओ, ठीक है ना? खुद से बनाओ. Test it when the balance sheet tallies. It is an extremely feel good exercise. And when you basically upload it and you get another model, it is again a feel good exercise. ठीक है? Make the model and play around with the assumptions.
So I'll just stop my screen over here, and I'll just share this one portion कि finally जो आयुष था, ठीक है, this slide finally works. तो अपने बेसिकली पीएसएम का कोर्स जो है वो इस पर्टिकुलर केस स्टडी से स्टार्ट किए थे. उसको फिल फाइनेंशियल मॉडल बनाने को बोला था, एंड दीज वेर द इश्यूज दैट ही हैड फेस्ड, right? What should he have done? He should have used Wise Sheet or Screener.in to automate the entire process and simply focus on the last bullet, that is defensibility of assumptions and thesis construction. मॉडल आप अपना एक बेसलाइन मॉडल बना लो, ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी है पूरा एकदम रिसर्च दम लगा दो पूरे कंपनी को. So if you are taking, like, imagine, so I'll just give you one more example. Wait, I'll just close this JSW infra wala thing. Just imagine something, this test model is ka, from a look and feel wise, what do you think? Is this model clean or not? Clean, right? Pretty clean. This is looking good. Imagine this model, the moment you are presenting it to the employer, getting rejected instantly. Instantly the model getting rejected. जो भी हार्डवर्क वगैरह आपने किया था कुछ भी काम नहीं आया. What is the reason? You didn't work on these. ठीक है, आपने इन पे बेसिकली काम नहीं किया. The reason I am telling you this is because, देखो, एक तरह से it is again the purpose of this session was to just end over here. But since किसी ने डाउट पूछा था, मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं. See, if I do a standard deviation of the growth rates, कितना आता है? 0. 15 का मैंने मान लिया यहां पर. तो आपका तो यार ग्रोथ स्टैंडर्ड डिविएशन 0 ही होगा ना. मैंने मेरे को तो आज तक कभी भी, ओके, आई थिंक माय एक्सेल इज नॉट विजिबल इट, या, इज इट विजिबल नाउ? ठीक है. What I'm trying to say is, if you are using a standard deviation, आपने फोरकास्ट पीरियड में स्टैंडर्ड डिविएशन में 15 का मैंने रेवेन्यू ग्रोथ मारा, ठीक है. Do you realize the hidden meta assumption that you are making? The hidden assumption that you are making is आपका कोई revenue growth का volatility ही नहीं रहेगा. Clean, clear cut, smooth revenue growth आपका रहेगा from 15, 15, 15. यहां पर what do you think is going to be the volatility? Do you think it is going to be high or not? अचानक से 33, 33, 35 का ग्रो कर रहा था, अचानक से it is going to 14. It's going to be a very high volatile company. ठीक है, very high volatile revenue. अब इसका ट्रेजेक्टरी चेंज हुआ, दैट इज ओके, बट क्या वॉलेटिलिटी आउटराइट ऐसे वैनिश हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है ना. आई, इसका बेसिकली कोई आंसर नहीं होता वेदर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है. If you are, the point that I'm trying to convey over here is, if you are taking these assumptions, we didn't discuss any of the assumptions का defensibility per se, अपने बस बेसिक मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री किया उसका गाइडेंस उठा करके बेसिकली रिवर्स इंजीनियर किए व्हाट वर द इन्फरेंसेस दैट वी कैन ड्रॉ. ठीक है, वी डिडंट डू एन assumption का पूरा की फैक्टर ड्यू डिलीजेंस का एक्सरसाइज. ठीक है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. And if we do some full course, then we can think of doing something like that. But this is what I'm trying to say is, maybe this will happen, but you better be able to back it up with your typical story. ठीक है, आपको स्टोरी से इसको बैकअप करना ही पड़ेगा. For every number, it is trying to tell you a story. Every number that you convey to the rest of the world, you are trying to tell a story. ठीक है, अगर मार्जिन यहां से एक्सपैंड कर रहा है तो मैनेजमेंट ने बस बोला है कि हमारा 500 से इतना का मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है. अपने बोलना बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज हाई एज अ परसेंटेज ऑफ अपना जो ये है, जो टोटल कॉस्ट है, द फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट इज हाई. दैट मीन्स जितना मेरा रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है, जितना मेरा रेवेन्यू बढ़ता है, अपना कॉस्ट इज फिक्स, उतना ही कॉस्ट रहता है. तो एक तरह से मेरा मार्जिन जो है, प्रॉफिटेबिलिटी, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट. सो यू हैव टू डू more due diligence on these things. Get the model construction out of sight.
ठीक है, जितना ऑटोमेट कर सकते हो मॉडल को ऑटोमेट करके रखो, एंड डू इंटायर इन्वेस्ट योर इंटायर थिंग टू बी द स्टफ. Okay, so I hope everybody was able to get the session, enjoy the session.